Okay, we have some of our youth track participants here. So could you briefly introduce yourself and tell us what makes you an active citizen? Myself, Jovan Kumar Bhai, from Odisha, Samalpur district, and from Patang organization. What makes you active citizen? पहले तो एक्टिव सिटीजनशिप मैं मुझसे इसीलिए मानता हूँ कि जो भी एक मनुष्य को करना चाहिए, एक साधारण सी चीज़ जो कि हमारा ड्यूटी बनता है, शायद वो चीज़ मैं करता हूँ। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया उसको ले जाना या ऐसा कुछ ड्यूटी छोटा छोटा चीज़ मैं करता हूँ, इसलिए मेरे को एक्टिव सिटीजनशिप मानता है। I consider myself as an active citizen because I do whatever duties are assigned to me for a citizen. Whenever, for example, whenever there are accidents or whenever there is a requirement of human manpower, I always am the first one to go, and that's why I think I'm an active citizen. Great. And what did you gain from participating in this consultation? पहले तो 2 दिन में मुझे बहुत सारा दोस्त मिले, बहुत सारे बड़े बड़े लोग मिले जो कि एनजीओ स्टार्ट किए हैं, बहुत प्रॉब्लम लेके जो बड़े बड़े अभी जो जिसके एनजीओ बहुत बड़ा हो चुका है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पर आके कैसे फिर यूथ लोगों को कैसे काम में इन्वॉल्व करके फिर आगे जा सकते हैं, What I learned from this last 2 days was that how I should go ahead in my vision or in my social work, and I also got a lot of friends and many great people who I would have never tried to meet. Great. Thank you. Okay, and now will you introduce yourself and tell us what makes you an active citizen? I'm Ketan. I'm basically from Pune, and I work from an organization called as Fuel, which is a student NGO founded by me and works on education awareness. That's it. Okay. And what did you think of this consultation? What did you gain from it? Actually, I learned a lot of things, and number one thing which I learned is the importance of how being youth is. And many times I used to feel that youth people don't have importance, but now I'm feeling that youth people have a lot of importance, and I wish I could be always youth in my coming days. That's what I learned. Great, thank you. Okay, and now will you introduce yourself and tell us what makes you an active citizen? I am Prakash, NGO दूसरा दशक बाप जोधपुर राजस्थान। हम लोग मुझे सर कि हम लोग यूँ मानते हैं कि हम जो वास्तविक मनुष्य के कर्तव्य होने चाहिए वो हम लोग करते हैं, और जब भी हमारा गरीब के साथ या कोई अन्याय हो रहा है उसके साथ में बोलना हमारा भी ड्यूटीज बनता है, और इसीलिए हम और भी काम करते रहें। What he says is actually I am active citizen because whatever duties have been assigned to me, I always try to perform it, and whenever there is injustice on youth or any other elements of the society, I am ready to sacrifice for them, and that makes me active citizen. Great, thank you. And what did you think of this consultation? What did you learn from it? इन दो दिवसीय बैठक में मुझे ऐसा लगा, ये अनुभव हुआ कि जो वास्तविक युवा के काम होते हैं वो क्या होते हैं और अपन किस तरीके से उसको कर सकते हैं, और हमारे गांव में मैं युवाओं के साथ जो काम कर रहा हूं उनको और बेहतरीन तरीके से मैं कर सकता हूं, और मेरे गांव या मेरे देश में मेरे युवा जैसे ही नाम रोशन। What I learned from these 2 days is how to actually utilize the youth energy and transform it into action. And I feel that whenever now there is any problem, I can understand in a youth way to make a solution rather than complain. Fantastic. Thank you both so much.